So guys, like after this oogenesis, like we were discussing the point of gametogenesis. Under the oogenesis we have already discussed the second point, that is the spermatogenesis. So guys, as we discussed that in the male there is a male gonads, and the male gonads are called as testes. Testes produce the male gamete, that is called as a spermatozoa or spermatids, you can say. The spermatogenesis takes approximately 62 to maximum of 70 days time for the formation of spermatozoa, approximately 62 to 70 days. The entire process takes place in the seminiferous tubules. Meanwhile, also takes place in the tail part of epididymis. Fine. Now let's see about the spermatogonia, spermatogenesis, how it takes place. First of all, the germ cell. The germ cell, which are called as like spermatogonia. And the spermatogonia, this is the primary germ cell, all right. And this spermatogonia, which is a primary germ cell, it have a mitotic division, that is the mitosis. It's a cell division. And from the spermatogonia, the another structure which is formed, that is the primary spermatocyte. So what I told you, the primary germ cell which is called spermatogonia, and this primary germ cell have a cell division, that is the samsutri vibhajan, that is the mitosis, and it have another like formation. From the spermatogonia it will be converted into the primary spermatocyte, and primary spermatocyte have one more cell division, that is the first meiosis. So when there is a first meiosis, what will happen? The chromosome number will be half. Till now, primary spermatocyte contains 46 number of chromosomes, but now because of the meiosis, the number of chromosome will be half. So after the primary spermatocyte, it will be converted into two structure. The primary spermatocyte का मतलब इसमें meiosis हुआ, मतलब दो number बदल जाएंगे. That will be primary spermatocyte will change into secondary spermatocyte. This is also secondary spermatocyte. All right, but interesting. How many number of chromosome? 23 number of chromosome. So 23 में से क्या होगा? देखिए मैंने क्या कहा? 46 का चेंज हो गया 23. So what happens? It contains 22X and it contains 22Y. Fine. Now what happens? They have another cell division, so which is called as, now I am just continuing the downside. The secondary spermatocytes, which are two in the number, which one will have a 22X and another will have a 22Y. Now what happens? Second meiosis cell division. So what happens? जो फर्स्ट सेकेंडरी oocyte था, secondary spermatocyte, which contains 22 into X, all right, it will be again converted into two cells, all right, and it will have 22X, and the second spermatocyte which has 22Y, it will be again changed into 22Y and 22Y. So now what happens? What did you see that? The big changes you have seen in the primary spermatocyte was the first meiosis. Because of that, the structure which was formed, that is the secondary spermatocyte, and secondary spermatocyte 22X chromosome, that was the first spermatocyte, and the second spermatocyte, it contains 22Y structure. So X and Y, they both were just separated. Now what happens? There will be another cell division, and that is called as a secondary meiotic division. And because of the secondary meiotic division, the first spermatocyte, which contains 22X, that is the female chromosome, like sex-linked chromosome, it will be again changed into two more cells, that is the 22X and 22X, and meanwhile the 22Y
chromosomes were also again divided, it was 22Y and 22Y. Now what did you see in here? आपने यहाँ पर क्या देखा overall? You have seen that there are 4 spermatids are formed. How many spermatids? These are the spermatids, not the mature spermatozoa. So spermatids or spermatozoa, they have a huge difference. Fine. So एक चीज याद रखना, till this कौन से लेवल तक? यहाँ तक. This entire process, हम इसको क्या कहेंगे? हम ऐसा कह सकते हैं, there are 4 spermatids. There are 4 spermatids. All right. Spermatids are formed in the seminiferous tubules. यहां तक जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया स्पर्मेटोजेनेसिस में, ये पूरी प्रोसेस किसमें होती है? दिस एंटायर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दी सेमाइनिफेरस ट्यूबुल्स ऑफ टेस्टिस. ये पूरी प्रोसेस सेमाइनिफेरस ट्यूबुल्स में होती है. मतलब यहां पर क्या है? स्पर्मेटिड्स आर देयर. आप ऐसा कह सकते हो, दीज आर इमेच्योर सेल्स. दीज आर इमेच्योर सेल्स. फाइन. अब क्या होगा? फॉर द मैच्योरेशन पर्पज, नाउ व्हाट हैपेंस? Spermatids are transferred. The spermatids are transferred towards epidermis. अब इनको कहां पर भेज दिया जाता है? जैसे सपोज कीजिए बच्चे घर में छोटे से 3 या 4 साल के हुए, उनके बाद में उनको डे बोर्डिंग के लिए भेज दिया, किसी को ऊटी भेज दिया, किसी को कहीं और भेज दिया. So what happens? It's the epidermis is like a day boarding. What happens? यहां पे इनका पूरा ख्याल रखा जाएगा. They will get the nourishment, they will get the energy, they will get all the basic education, everything. What kind of education? The magic touch for the ovum. So ये सारी चीजें यहाँ पर इसको कहां से मिलेंगी? एपिडर्मिस में मिलेंगी. So this entire process takes place in the epidermis. So epidermis के कौन से पार्ट में? The tail part of epidermis will have all these basic things. Fine. So what happens? ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? Spermatids are transferred into the epidermis. And what happens here? The morphological changes takes place. Morphological changes take place. And because of the morphological changes, what happens? Now you can tell them as a 4 mature spermatozoa. Mature spermatozoa. What they will receive from the epidermis? They also receive from the epidermis fructose for the energy purpose. They will epidermis में जब suppose spermatids पहुंचेंगे तो epidermis में इनके पास इनके लिए क्या important चीजें होंगी? When they reach to the epidermis, they will get many new things. मैंने कहा था like a day boarding. They will get the head, they will get acrosomal membrane. sperm को क्या मिलेगा? Acrosomal membrane. Tail का formation already seminiferous tubules में start हो जाता है, but it will not be completed. The tail formation also will be entirely completed in the epidermis, and the body part will contain some mitochondria now. Body को आप क्या मिल जाएगा पूरा? It contains some mitochondria, and mitochondria I already told you that here fructose will be present. So mitochondria will receive the energy from the fructose. It receives the ATP, and now what happens? In epidermis itself, the sperm will be start migrating. ये धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं. So epidermis से इनको एक तो हेड पोर्शन मिलेगा, इनको एक्रोसोमल मेम्ब्रेन मिलेगी. एक्रोसोमल मेम्ब्रेन का फंक्शन मैं अभी आपको आगे बताऊंगा. एंड इट विल ऑल्सो रिसीव बिग टेल. टेल की तरफ से क्या होगा? इट विल हेल्प इन दी मूवमेंट. फाइन. दीज ऑल बेसिक चेंजेस, जिसको मैंने क्या नाम दिया? आई जस्ट टोल्ड देम द मोर्फोलॉजिकल चेंजेस. दीज ऑल चेंजेस विल टेक प्लेस इनटू द epidermis, and now it is called as a mature spermatozoa. So guys, this is the entire story regarding the spermatogenesis. So what did you understand? आपको क्या समझ में आया यहाँ पे? You understood two things. First thing was that in the seminiferous tubules, number 1 portion, there only the spermatids are formed. Spermatids, how many number of spermatids in one spermatogenesis process? There are 4 sperms are formed. So these are the immature cells. When they migrate towards the epidermis, which is just the adjoint structure to the seminiferous tubules, उसके just पास वाली structure. एक और चीज, एपिडर्मिस में एक और चीज नहीं आती है यहाँ पे. एपिडर्मिस रिसीव दी टेस्टोस्टेरोन. कहां से मिलेगा टेस्टोस्टेरोन एपिडर्मिस को? टेस्टोस्टेरोन विल बी रिसीव फ्रॉम दी लेडिंग सेल ऑफ दी, या जिसको आप लोग इंटरस्टिशियल सेल्स कह सकते हो, ऑफ दी
लेडिंग सेल्स विच आर जस्ट एडजुवेंट टू द सेमानिफेरस ट्यूबुल, एक साइड में सेमानिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं और उसके लेफ्ट साइड के अंदर क्या होता है, एपिडाइमिस होता है. तो लेडिंग सेल दे विल रिसीव दी या दे सीक्रेट दी टेस्टोस्टेरोन. लेडिंग सेल को कौन स्टिमुलेट करेगा, एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको आप लोग दूसरा नाम जानते हो ICSH, इंटरस्टिशियल सेल stimulating hormone, that is the LH hormone, and it stimulates the leading cell, they release the testosterone, it will travel towards the epidermis, and from that testosterone the sperm will become mature, and now it is a mature spermatozoa. So guys, what did you understand? Because of the mitosis primary spermatocyte bana, and because of the first meiosis 2 spermatocytes were formed, then because of the second meiosis the 2 spermatocytes से कितने बन गए, 4 spermatids are formed, जिसमें से 2 22X थे and 2 22Y थे. That's it regarding the spermatogenesis. So how many days the sperm can survive in the uterine cavity or fallopian tube? स्पर्म कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, कितने दिन तक वो एंजॉय कर सकता है? द स्पर्म कैन मैक्सिमम स्टे फॉर 5 to 6 days, लाइक अप टू 6 days इट कैन स्टे इन द यूट्राइन कैविटी और फेलोपियन ट्यूब. बट इसके बारे में मैंने जिक्र किया था आज की आपकी बिगनिंग क्लास में. द स्पर्म कैन सर्वाइव अप टू 6 days, इट कैन एंजॉय इनटू द यूट्राइन कैविटी बिकॉज यूट्राइन कैविटी इज द मोस्ट फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर द स्पर्म. Like even though sperm won't receive such kind of environment in the testis, but it receives such kind of huge favorable environment in the uterine cavity because of the warmness, because of the mucus, glycoprotein which is present, secreted by the endometrium. Fine. Now 6 days तक आप मैंने कहा कि ये रह सकता है survive, but what happens only up to 48 to 72 hours, मैक्सिमम 72 आवर्स, 72 घंटे तक क्या होता है, इसकी कैपेसिटी होती है. किस चीज की, पेनिट्रेशन कैपेसिटी, या आप इसको वर्ड यूज करते हो पेनिट्रेशन के लिए, मैंने एक कल नया वर्ड यूज किया था, कैपेसिटेशन. इसलिए आप लोग क्या याद रखते हो, यूजुअली वी स्टडी इन आवर बुक्स दैट स्पर्म का लाइफ स्पान कितना होता है, 48 to 72 आवर्स. लाइफ स्पान का मतलब हमें उसी चीज से मतलब है जिससे हमें कोई एडवांटेज हो. मतलब स्पर्म 72 घंटे तक अपना रियल काम कर सकता है. आफ्टर 72 आवर्स व्हाट हैपेंस, स्पर्म की जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. बिकॉज ऑफ द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन या बिकॉज ऑफ द हेड, अगर वो दोनों चीजें नहीं होंगी, स्पर्म का पेनिट्रेशन पावर नहीं होगा, वो यूजलेस स्पर्म आप कह सकते हो उसको, या लाइक डिस्ट्रक्टिव स्पर्म भी कह सकते हो. सो व्हाट हैपेंस, 6 days तक प्रेजेंट रहेगा बट यूजफुल विल बी ओनली अप टू 72 आवर्स. Now when you see the ovum structure, when you see the structure of ovum, I told you about the ovum. This is the largest cell of the body. Its overall diameter is approximately 130 micron. This is the largest cell of the body. Approximately diameter is 130 micron. When you see the ovum, the many basic things which you can find here is, there are many small structures, small cells which are present on the surface of the ovum, which are called cortical granules या granulosa cells. ये कहाँ से आती हैं? From where this ovum receive these all cells? See, cortical granules या granulosa cells are not the part of ovum. Please remember, these cells, the outer cells, the cortical granulosa cells are received from the Graafian follicle. Actually ये cells कौन बना रहा था? Graafian follicle इसका formation कर रहा था. But from the Graafian follicle the cells, ओवम के साथ साथ ये सेल्स बोलेगी, बोलते हैं जैसे छोटा बच्चा कहीं माइग्रेट करा, बोला मैं भी इसके साथ जाऊंगा, तो जैसे ओवम बाहर आया, कोर्टिकल ग्रेन्युलोसा जो सेल्स थी वो भी ग्राफिन फोलिकल के साथ साथ ओवम के साथ माइग्रेट कर गई. बट and honestly we are speaking that this is not a part of ovum. ये ovum का पार्ट नहीं होती, बट ovum की जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए बाहर से आती हैं, इनको बोलते हैं कोर्टिकल ग्रेनुलोसा सेल्स. ओके, दिस इज द कोर्टिकल पार्ट ऑफ द ovum. अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. When you see the ovum real structure, the real structure begins from here, the outer cemented layer. The outer cemented layer. What is the name of that cemented layer? It is called as the outer cemented layer is called as zona pellucida. Zona pellucida के बारे में आप क्या याद रखोगे? It is a cemented layer. Cemented layer means it's a very hard layer. It's a very hard layer
फर्स्ट थिंग, अभी यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, दिस जोना पेलुसिडा कंटेन्स या दिस जोना पेलुसिडा लेयर इट्स ए ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। सबसे पहले यह चीज आपको याद रखनी है, इट्स ए ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। फर्स्ट थिंग, इट कंटेन्स हाइल्यूरोनिक एसिड, इट कंटेन्स हाइल्यूरोनिक एसिड, इसके पास हाइल्यूरोनिक एसिड होता है, एंड ऑल्सो इट रिलीज कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये क्या रिलीज करती है? कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स को रिलीज करती है। ये तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी है रिगार्डिंग दी जोना पेलुसिडा। एंड बिकॉज ऑफ द सीमेंटेड लेयर, इसका फायदा क्या होगा? इट प्रिवेंट्स दी पॉलीस्पर्मिया। अदरवाइज इन एवरी फीमेल एवरी टाइम देयर विल बी ट्विन प्रेगनेंसी। हर बार क्या होता वहां पे? ट्विन प्रेगनेंसी होती। बट इट्स लाइक वी शुड से थैंक यू टू द जोना पेलुसिडा, बिकॉज ऑफ जोना पेलुसिडा देयर विल बी नो twin pregnancy, because zona pellucida is a cemented layer, it prevents the sperm का double migration, that is the polyspermia, because fallopian tube के पास तो कई लाखों की संख्या में sperm पहुंचते हैं, not लाखों की संख्या में, sorry, only in thousands the sperm will reach. Fine. Next one, जोना पेलुसिडा के बारे में आप क्या याद रखोगे? कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज करता है, हाइल्यूरोनिक एसिड होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। नेक्स्ट वन, अब जोना पेलुसिडा के नीचे द जोना पेलुसिडा विल हैव स्मॉल ओपनिंग कह सकते हो, या देयर इज अ स्मॉल मेम्ब्रेनियस लेयर इन अंडर द जोना पेलुसिडा व्हिच इज कॉल्ड उलिमा। देयर इज अ स्मॉल मेम्ब्रेनियस लेयर अंडर द जोना पेलुसिडा, वेरी स्मॉल मेम्ब्रेनियस लेयर, विद द डायग्राम आई कांट डिस्क्राइब इट प्रॉपर्ली, इट इज कॉल्ड एज उलिमा। ओके, उलिमा के बारे में क्या कहा जाता है? उलिमा इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द स्पर्म, या आप ऐसा कह सकते हो इट इज द एंट्री गेट, द्वार जिसको आप कहते हो, एंट्री गेट फॉर द स्पर्म। सो फाइन, अगर स्पर्म को ओवम के अंदर पेनिट्रेट करना है या अंदर एंट्री करनी है तो इसको बेसिकली किसको टच करना पड़ेगा? इट हैज टू टच दी उलिमा। तो उलिमा के बारे में आपको ये क्या याद रखोगे? एक और पॉइंट, मेम्ब्रेनियस लेयर, इट्स ए एंट्री पॉइंट ऑफ स्पर्म, it's a entry point of the sperm. Now let's begin the last point. See, below the ulima there is little bit space is available, and from there, like zona pellucida, one more membranous layer will be present. इसको प्रोटोप्लाज्म लेयर भी कह सकते हैं। Okay, fine. Now let's come on that you can see the space, the white color, आपको एक space यहां पे काफी बड़ा space दिखाई दे रहा है। This space is called as perivitelline space. What we can call this space? This space is called perivitelline space. And जो मैंने ब्लैक मार्कर से यहां पे ड्रॉ किया है एक और अंदर सर्किल, उस मेम्ब्रेन को, जो मैंने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज विटेलाइन मेम्ब्रेन। So this is the विटेलाइन मेम्ब्रेन, और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर और उलिमा से पहले, विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर और उलिमा से पहले जो एक स्पेस दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ए पेरीविटेलाइन स्पेस। एंड पेरीविटेलाइन स्पेस के ऊपर जो रेड मार्कर में मैंने इंडिकेट किया, दैट इज दी उलिमा। सो दिस इज दी उलिमा, ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन इट हियर। फाइन, एंड आफ्टर द उलिमा देयर इज जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के ऊपर जो स्मॉल ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं विच आर माइग्रेटेड फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, दे आर कॉल्ड एज ए कोर्टिकल ग्रेनुलोसा cells. Fine. This is the basic structure of the ovum. So guys, मैंने आपको इसके बाद ये वर्ड सुनिए, hyaluronic acid. What happens when you see the sperm? जब आप किसके बारे में देखोगे? When you see the structure of the sperm, मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया, the sperm contains the head, sperm contains the body, and it contains a magic tail. Fine. The sperm head have a small covering membrane which is called as a acrosomal membrane. स्पर्म के हेड के ऊपर क्या होता है? इट कंटेन्स ए स्मॉल मेम्ब्रेनियस स्पेस दैट इज कॉल्ड एज ए एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्रोसोमल। और यही एक्रोसोमल मेम्ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? दिस एक्रोसोमल मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन, एक किसी भी स्पर्म को अगर आप फर्टिलिटी देखते हो, अगर आप स्पर्म को बाहर देखोगे माइक्रोस्कोप से, आपको दो चीजें जरूरी होती हैं।
ना, एक तो स्पर्म के पास टेल प्रेजेंट है कि नहीं है, दूसरा स्पर्म के पास एक्रोसोमल मेम्ब्रेन एरिया प्रेजेंट है कि नहीं है। बिकॉज स्पर्म के सबसे बड़ा काम है मोटिलिटी, दूसरा काम होता है स्पर्म का पेनिट्रेट करना। किसको पेनिट्रेट करना? ये जो आपके सामने मैंने एक मैजिक स्ट्रक्चर बनाई है ओवम, इसको पेनिट्रेट करना। एंड फॉर पेनिट्रेटिंग दिस वन इट रिक्वायर लोड्स ऑफ थिंग्स, बिकॉज इसके पास एक सबसे बड़ी चीज है जोना पेलिसुडा, इसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा। फाइन, सो स्पर्म कंटेन्स एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। एक्रोसोमल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस के कारण स्पर्म के पास कैपेसिटी होती है किसकी? कैपेसिटेशन की। कैपेसिटेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू पेनिट्रेट कर पाना, इसकी कैपेसिटी होती है किसके पास? स्पर्म के हेड के पास। नाउ व्हाट हैपेंस, स्पर्म की एक्रोसोमल मेम्ब्रेन में क्या रिएक्शन होता है? व्हाट हैपेंस टू द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन? एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के पास क्या रिएक्शन होगा? व्हाट हैपेंस टू द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन? द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन इट रिलीज द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन रिलीज द हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। ये कौन सा एंजाइम को रिलीज करता है? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। जैसे ही स्पर्म, नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे सपोज कीजिए क्या होता है, जोना पेलिसुडा को टच करने की सबको परमिशन है, एनीवन कैन टच द जोना पेलिसुडा। एनीवन मींस ओनली स्पर्म, नॉट एनीवन। So zona pellucida can be touched by anyone, like any of the sperm. Many sperm can touch the zona pellucida, but only one sperm can penetrate the zona pellucida. Many sperm can touch the zona pellucida, but only one can completely penetrate and touch to the ulima. Ulima को touch करने की केवल और एक sperm को permission है, not every sperm get the permission. Fine. What happens when sperm, जैसे suppose कीजिए you see the here, when the sperm touch to the zona pellucida, what happens? Zona pellucida जैसे टच करेगी, यहां पे zona pellucida को sperm टच करेगा, what happens? Zona pellucida will release the this cortical granules. Zona pellucida release the cortical granules, and meanwhile आपके पास sperm के पास भी बहुत ज्यादा एनर्जी है, it contains hyaluronidase enzyme. So what happens? यही इसका सबसे बड़ा पावर है। Hyaluronidase enzyme dissolve the glycoprotein layer, और आप कह सकते हो hyaluronic acid layer of the zona pellucida. So what happens? Zona pellucida को कैसे डिसोल्व करता है स्पर्म? It dissolve the zona pellucida with the help of hyaluronidase enzyme. How? Hyaluronidase enzyme, it can destroy the glycoprotein layer, little bit space, not completely, and it can penetrate to this hyaluronic acid. जैसे ही हाइल्यूरोनिक एसिड और ग्लाइकोप्रोटीन को ये पेनिट्रेट करेगा, जोना पेलिसुडा को गुस्सा आएगा, एंड इट विल रिलीज दी कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स. It will get angry and it will release the cortical granules. So what happens? By the time जैसे इसको गुस्सा आएगा, cortical granules रिलीज करेगा, by the time sperm लकी होगा, जो भी sperm लकी होगा वो अंदर एंट्री मार जाएगा. So what happens now? The sperm is inside. Alright? When sperm touch to the ulima, जैसे ही sperm ulima को टच करता है उस समय गुस्सा आता है किसको? जोना पेलिसुडा को. When sperm touch to the ulima, what happens? Zona pellucida will release the cortical granules. And this reaction is called as, इस रिएक्शन के कारण क्या होगा? जैसे ही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मार्केट में आएंगे, मतलब इस पूरे एरिया में अवेलेबल होंगे, स्पर्म ऑलरेडी अंदर एंट्री कर जाएगा. स्पर्म तो लकी आदमी है, यस, सो इट विल बी एंटर्ड इनसाइड. नाउ व्हाट हैपेंस? व्हेन ए सिंगल स्पर्म एंटर इनटू द जोना पेलिसुडा, या आप कह सकते हो व्हेन ए स्पर्म एंटर इनटू द पेरीविटलाइन स्पेस, इमीडिएटली कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स विल बी रिलीज and zona pellucida will be blocked permanently. It will be blocked permanently. What happens? When a single sperm touch to the ulima and zona pellucida, everything will be mixed and they release the cortical granules. Because of the presence of cortical granules, the zona pellucida will be blocked permanently and sperm will be already inside the perivitelline space. This reaction is called as, ये जोना पेलिसुडा की ये रिएक्शन थी, इट इज कॉल्ड एज ए उलिमा ब्लॉक. आप इसको क्या कह सकते हो? आप इसको या तो उलिमा ब्लॉक कह सकते हो, और यू कैन कॉल एज ए जोना रिएक्शन. सो इफ समवन आस्क यू इन योर एग्जाम व्हाट इज द जोना रिएक्शन, सो आप सिंपली कह सकते हो व्हेन एनी स्पर्म टच टू द जोना पेलिसुडा रिलीज मेनी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, एंड मीनवाइल व्हाट हैपेंस? द उलिमा विल बी ब्लॉक्ड परमानेंटली, व्हिच इज कॉल्ड उलिमा ब्लॉक. And because of the presence of cortical granules, the zona pellucida also will be blocked permanently. This is called as zona reaction.
तो जोना पेलिसिडा का ब्लॉक होना, उलिमा का ब्लॉक होना, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का रिलीज होना, ये तीनों चीजें मिक्स होने के बाद क्या वर्ड आएगा? जोना रिएक्शन। उसको हम क्या कहेंगे? जोना रिएक्शन। तो जोना रिएक्शन का मतलब इट इज द रिएक्शन ऑफ जोना पेलिसिडा। व्हाट रिएक्शन? द एंग्री रिएक्शन। व्हाट एंग्री रिएक्शन? एक तो उलिमा को ब्लॉक कर देती है, बिकॉज उलिमा जोना पेलिसिडा की एक मेम्ब्रेन होती है, और दूसरा कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स को रिलीज करना। दिस इज कॉल्ड एज उलिमा ब्लॉक और जोना रिएक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस? द स्पर्म विच आर नाउ माइग्रेटिंग, स्पर्म आप कहां पर एंजॉय कर रहे हैं? एक इनको एक स्विमिंग पूल जैसा मिल गया, दैट इज द पेरीविटलाइन स्पेस। अब जो लकी स्पर्म था, उस मैजिक स्पर्म के जैसे टच हुआ, जोना रिएक्शन हुई। जोना रिएक्शन होते इस ओवम में क्या होता है? मैंने कहा था ओवम में एक चीज होगी, सेकेंडरी मियोसिस कंप्लीट होगा। क्या होगा? सेकेंडरी मियोसिस विल बी कंप्लीटेड। तो जैसे ही वहां पे जोना रिएक्शन होती है या उलिमा ब्लॉक होता है, ओवम में अंदर क्या गड़बड़ होती है? अंदर की तरफ यहां पे हलचल मच जाती है कि स्पर्म आ रहा है अंदर। तो व्हाट हैपेंस? द सेकेंडरी मियोसिस विल बी कंप्लीटेड। व्हेनेवर द सेकेंडरी मियोसिस कंप्लीट, व्हाट हैपेंस? दो रिजल्ट निकलते हैं। एक तो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई बनता है, और एक क्या बनता है? सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी। ये अंदर खलबल मचती है। इट इज ए वेरी डेंजरस थिंग। पूरी ओवम में अंदर आग लग जाती है। एक साइड में यहां पे लड़ाई होती है इनके अंदर, और एक साइड में यहां पे क्रोमोसोम खुद एक साइड में हो जाते हैं, इनको फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, और दूसरी साइड में क्या हुआ? यहां पे बन गया सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी के साथ मैंने आपको पहले भी कहा था, इसके साथ क्या होता है? अत्याचार होता है। इसके साथ क्या अत्याचार होता है? इसको बाहर धक्का मार दिया जाता है। सो व्हाट हैपेंस? द सेकेंडरी पोलर बॉडी विल बी पुश्ड इनटू द पेरीविटलाइन स्पेस। अब स्पर्म बोलेगा, अरे मेरा भाई मैं तेरे से मिलता हूं, तो क्या करेगा? द स्पर्म विल बी मीट टू दी सेकंड पोलर बॉडी, बट सेकंड पोलर बॉडी के साथ स्पर्म भी पेनिट्रेट नहीं करेगा, ये इसको भी लाइक नहीं करता। सो व्हाट हैपेंस? द सेकंड पोलर बॉडी विल बी माइग्रेटेड टुवर्ड्स दी पेरीविटलाइन स्पेस। और क्या होगा? जैसे ही सेकेंडरी पोलर बॉडी पेरीविटलाइन स्पेस में एंटर करता है, मीनवाइल द स्पर्म विल एंटर इनसाइड दी विटलाइन मेम्ब्रेन। तो जिस समय पेरीविटलाइन स्पेस में सेकंड पोलर बॉडी एंटर करता है, उसी समय जो स्पर्म यहां पर घूम रहा था, वेट कर रहा था अंदर जाने का, वो जो स्पर्म कहां पर? पेरीविटलाइन स्पेस में। दिस स्पर्म विल एंटर इनसाइड दी विटलाइन मेम्ब्रेन। और ऐसा कहा जाता है, एक्यूरेटली आई कैन नॉट से यू द गारंटी दैट, बट एक आइडिया ये लगाया जाता है कि स्पर्म पूरा का पूरा, जो स्पर्म की पूरी स्ट्रक्चर है, हेड, बॉडी, टेल, एवरीथिंग विल नॉट गो इनसाइड दी पेरीविटलाइन स्पेस। इस मेम्ब्रेन के अंदर पूरा नहीं जाता है, सॉरी, everything will not be, sperm will be nude now, the sperm will only the sperm nucleus, sperm का जो प्रोन्यूक्लियाई है, एक मेच्योर न्यूक्लियाई है जिसमें क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, वो न्यूक्लियस मटेरियल विल गो इनसाइड एंड रिमेनिंग, जैसे सपोज स्पर्म के ऊपर, जैसे सपोज लाइक स्नेक के ऊपर उसकी सपोज आउटर कवरिंग होता है स्नेक का, सेम लाइक दैट स्पर्म का भी जो आउटर कवरिंग है वो पूरा वो छोड़ देता है कहां पर? विटलाइन स्पेस में। और अपना जो रियल मटेरियल है, जो न्यूक्लियस मटेरियल है जिसके पास क्रोमोसोम्स हैं, दैट विल गो इनसाइड एंड व्हाट हैपेंस? इट विल बाइंड विद द फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। नाउ व्हाट हैपेंस? फीमेल प्रोन्यूक्लियाई एंड मेल प्रोन्यूक्लियाई आर मिक्स्ड अप, दोनों मिल जाते हैं, एंड व्हाट विल हैपन? द जाइगोट विल बी फॉर्म्ड। फीमेल प्रोन्यूक्लियाई कंटेन्स 23 chromosomes and male pronuclei मतलब sperm also contains the 23 chromosomes. So male pronuclei and female pronuclei are mixed and sperm का जो बाकी कवरिंग एज था, उसका हेड था, उसकी बॉडी पार्ट थी, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया थी या उसका टेल था, वो सब किस में पड़ा रहता है? पेरीविटलाइन स्पेस में। पेरीविटलाइन स्पेस में एक और चीज जो आगे चल के डीजनरेट होती है वो है सेकंड पोलर बॉडी। तो सेकंड पोलर बॉडी और स्पर्म का आउटर कवरिंग एज विल बी प्रेजेंट इन द पेरीविटलाइन स्पेस एंड विटलाइन मेम्ब्रेन में जो कि प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है, इट कंटेन्स मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दी फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से आप क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। अब जो नई स्ट्रक्चर बनके रेडी होगी, उस स्ट्रक्चर का आप क्या नाम दोगे? दैट स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड एज जाइगोट। एंड जाइगोट हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम? इट कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। अब वो लकी है मेल है या फीमेल का क्रोमोसोम है, दैट वी डोंट नो अबाउट दैट। So 46 chromosome and it is a diploid structure. It is a diploid structure. ये चीज आपको याद रखनी है। तो जाइगोट हम किसे कहते हैं? जाइगोट इज नथिंग बट इट इज ए फर्टिलाइज ओवम। हम क्या कह सकते हैं? फर्टिलाइज ओवम को आप जाइगोट कह सकते हो, या आप ऐसा कह सकते हो, मैंने फर्टिलाइजेशन की आपको आज की बिगिनिंग क्लास में क्या बताया था फर्टिलाइजेशन के बारे में? इट इज द फ्यूजन ऑफ फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड मेल प्रोन्यूक्लियस। अब समझ में आया कहां से वो प्रोन्यूक्लियाई वर्ड आया? फीमेल प्रोन्यूक्लियाई जो कि सेल डिवीजन के बाद में आया था, एंड मेल प्रोन्यूक्लियाई, इन दोनों के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हमने क्या नाम दिया था? फर्टिलाइजेशन। उस पूरी प्रोसीजर का नाम था, और प्रोसेस का रिजल्ट क्या निकला था हमारे पास? जाइगोट आया था।
सो गाइज दिस इज द बेसिक थिंग्स या दिस इज द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द ओवम। सो आपको समझ में आया होगा उलिमा ब्लॉक किसे कहते हैं। जैसे स्पर्म टच करेगा उलिमा एक स्पर्म को अंदर अलाउ करेगी और इमीडिएटली ब्लॉक हो जाएगी, उसको हम कहेंगे उलिमा ब्लॉक। और जोना पेलुसिडा विल रिएक्ट इट, वो रिलीज करेगी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को, दैट इज कॉल्ड एज ए जोना रिएक्शन। उस रिएक्शन का फायदा क्या होगा, देयर विल बी इट प्रिवेंट्स द पॉलीस्पर्मिया। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग फर्टिलाइजेशन।